चलिए, ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। क्योंकि हम सब पत्रकार हैं तो आज पत्रकारों के लिए भी एक छोटा सा सेगमेंट उनकी बात भी करेंगे। बात करेंगे बुधवार को नई दिल्ली में दूसरा कल्याण बरुआ पुरस्कार 2024 समारोह आयोजित किया गया, जिसे नॉर्थ ईस्ट मीडिया फोरम और माय होम इंडिया द्वारा असम के प्रख्यात पत्रकार स्वर्गीय कल्याण बरुआ की स्मृति में संयुक्त रूप से आयोजित किया गया। आपको बता दें कि यह पुरस्कार उन पत्रकारों और मीडिया कर्मियों को दिया जाता है जो अपनी रिपोर्टिंग और कहानी से पूर्वोत्तर क्षेत्र को बढ़ावा देने में योगदान करते हैं। इस साल आपको बता दें पुरस्कार 3 श्रेणियों में मिला है, जिसमें प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है और डिजिटल मीडिया में भी इसको दिया गया है। इसके अलावा एक वरिष्ठ पत्रकार को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। इसके साथ ही बता दें कि पहला कल्याण बरुआ पुरस्कार पिछले साल उनके जन्म दिवस पर आयोजित किया गया था। असम के सबसे श्रेष्ठ पत्रकारों में से एक स्वर्गीय कल्याण बरुआ द असम ट्रिब्यून के साथ 27 से अधिक सालों तक जुड़े रहे। उन्होंने 2021 में कोविड-19 के कारण अपनी पत्नी नीलाक्षी भट्टाचार्य के साथ इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उनकी याद में और पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास में उनके योगदान को सम्मानित करने के लिए 2022 में माई होम इंडिया ने नॉर्थ ईस्ट मीडिया फोरम के साथ मिलकर ये सालाना पुरस्कार शुरू किया था, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर कल्याण बरुआ की याद में ये कार्यक्रम रखा गया है। और उत्तर पूर्व की हर खबर हम दिखाने का प्रयास जरूर करते हैं जनमत में, तो ये खबर भी आपको दिखाई और पत्रकारों के सम्मान की बात भी हमेशा हम सर्वप्रथम आगे ही रखते हैं। May we all please have a big round of applause for Steve. The legacy of an extraordinary journalist. Kalenda was not just a journalist, he was a trailblazer who represented the voice of Assam and the Northeast in the national arena with integrity, dedication, and unwavering commitment. His years of service as a special correspondent of the Assam Tribune here in Delhi and his tenure as a member of the Press Council of India stand as a testament to his pursuit of excellence in journalism. Tragically, his journey, along with that of his wife Nilakhi Bu, who also belonged to the fraternity of journalism, was cut short by COVID-19 pandemic. Their untimely demise left a void that will forever be felt in the hearts of those who knew and admired them. As someone who once had the privilege of working in the journalism field, I had the opportunity to witness Kalyanda's contributions and his passion for truthful reporting. He was a familiar figure whose work inspired many, including me. The Kalyan Bरुआ Awards are a fitting tribute to his memory, recognizing the relentless efforts of journalists who, like him, uphold the principles of fairness, courage, and commitment to this craft. It is heartening to see that the Northeast Media Forum and My Home India take the noble initiative ensuring that his legacy continues to inspire future generations. And I'm grateful to my brother, my colleague, Adharaniya Shri Sunil Devdhaji, for initiating My Home India and bringing emotional integration between people from different parts of the country. Thank you, and I expect anticipated round of applause from Devdhaji and his team. Journalism is not merely a profession. It's a calling to serve as the conscience of society and the fourth pillar of democracy. It is about asking the tough questions, amplifying unheard voices,
and holding power accountable. I'm confident that these awards will encourage journalists to carry forward this mission with the same fervor that Kalyan Barua exemplified. Let us honor his memory by celebrating the achievements of the awardees today and by committing ourselves to upholding the ideals he stood for, that is, what Kalyanda stood for. I extend my heartfelt congratulations to all the recipients of the Kalyan Barua Awards 2024 and wish them a very best as they continue to shine a light on the truth. Thank you. Thanks to all. Joya Ekam Vande Mataram. Honored to be present here in the Kalyan Barua Journalist Awards 2024 organized by Northeast Journalist Forum and My Home India. Through this event, we are paying tribute to the ace journalist from Northeast India, late Kalyan Barua, and to all the journalists of India for their contribution to the field of journalism, their dedication and their contribution to the field of journalism. We, the Northeast Forum of Journalists, I was always a follower of late Kalyan Barua. He contributed a lot to the journalism, the impartiality and strength. He was famous for his impartial stature, strength, and his focus of real sense in real journalism. So hundreds and thousands of fan followers are there even after his untimely demise of Kalyan Barua. So here we once again pay our homage to the noble soul, the great journalist Kalyan Barua. Yes, he was very friendly to all of us, and I'm so proud to say that I'm from the same fraternity. I started career as a journalist, so in that connection also we had deep respect for Kalyan Barua and Nilakhibu. Today again I take the opportunity to pay homage to both the journalists. Thank you. Together, we can be a force to reckon with, and Northeast Media Forum is a perfect catalyst to hasten this coming together. In closing, I urge my fellow journalists covering the Northeast, particularly those from the Northeastern states, to take on one extra responsibility more in our pursuit to pave the way for a more equitable and understanding future. Let us also be the ambassadors of the Northeast. उन्होंने कोई बड़ा अवार्ड जर्नलिज्म अवार्ड कभी विन नहीं किया, but still it is very important. Why are we celebrating him today? क्योंकि उन्होंने दिल्ली को नॉर्थ ईस्ट के साथ जोड़ा. I think that was his biggest contribution. Daily reporting उन्होंने किया. और मैंने किताब लिखी हूँ असम में, मेरा बहुत सारे मतलब जो रेफरेंसेस असम ट्रिब्यून का है. क्यों? कल्याण बरुआ ने उसको रिपोर्ट किया. He was such a helpful person. Anyone on anything which he knew, he would share the information or the knowledge. And he helped many journalists, and many times he also asked me, there's so-and-so who has come from the region is looking for placement, see if you can help. So whenever we could do anything, we did together. There were so many entries and all of them par excellence. So to sort out a few was injustice for many. But then you cannot have everybody on the stage.
We went through the beautiful writings, and all the other aspects of media. The prize winners, if you get a chance, you should read their writings. They are so good. Demise. সেয়া কেৱল অসমৰ জাৰ্নেলিজিমৰ কাৰণে নহয়, মই ভাবোঁ সেই আঘাতটো সকলোৱে সমগ্ৰ ভাৰতৰ জাৰ্নেলিষ্ট ফ্ৰেটাৰ্নিটিটোৱে ৰন্ধে ৰন্ধে উপলব্ধি কৰিছিল। তেওঁ আৰু তেওঁৰ পত্নী নীলাক্ষী ভট্টাচাৰ্যই অসমৰ যিটো এটা এডভেঞ্চাৰ স্পৰ্টছ গ্ৰুপ আছে এক্সপ্ল'ৰাৰ্ছ, ময়ো কেতিয়াবা তাৰ সভ্য আছিলোঁ, সেইটোৰ সৈতেও জড়িত আছিল। কিন্তু তেওঁলোকৰ জীৱন হঠাতে যি কৰুণ সমাপ্তি, মই ভাবোঁ সেই আঘাত সতকাই পাহৰাৰ টান। Kalyan Barua was one such storyteller who loved to tell stories. These stories originated in the love for his region. In losing him, we have lost a strong voice. He would have loved nothing more and would have been very happy with more voices and more stories from the region. Needless to say, the role of the media is extremely vital to bring forth the countless stories from the Northeast India. While the region is distinct in its identity, culture and traditions, the resonance is much the same in the rest of the country. He was my one-stop, go-to person for everything concerning Northeast. He was almost like a moving encyclopedia for everything related to Northeast. Those days, I used to work for a television channel, and it was required of me to, because I was from the Northeast, so everybody assumed, as Moshmiba rightly said, either they did not know or they felt that if I am from Assam, I must be knowing everything about every state in the Northeast. So anything that happens, it comes on my head. So, and invariably I would turn to Kwalanda for a background on the story. I was there to report that day's news, but what had happened before that day's development, Kwalanda was always ready to fill me in on all the details. আজি কেইবাটাও মিশ্ৰিত অনুভৱ মোৰ হৈছে। সেই কথাকেইটা মই ক'বলৈ পালে মই নিজকে সৌভাগ্য অনুভৱ কৰিম। মই মোৰ দেউতাক তৃতীয় শ্ৰেণীতে হেৰুৱাইছিলোঁ আৰু সেই তৃতীয় শ্ৰেণীৰ পৰা মায়ে হাজিৰা কৰিছিল। মোৰ দুগৰাকী বা আছিল। For recognizing my effort in making people aware about some issues of Manipur. It's truly humbling to be recognized in such a meaningful and wonderful way. It's a good opportunity and it's a big platform for us people from Northeast, because there's lots of things it's still yet to uncover. So I think as Mominaba already said everything, our feelings and our pain also, how we are fighting with our wars and the situations and all. Still we have lots of stories to uncover. आज हम लोग कल्याण दा के इस कार्यक्रम में आए हैं। कल्याण दा एक बहुत अच्छे व्यक्ति थे। He was a great human being. सबसे पहले वो एक बहुत अच्छे इंसान थे और पिछले बार भी कहा, उसके पिछले बार भी मैंने कहा और आज भी बताऊंगा, पत्रकार ने कलरलेस रहना चाहिए। उसके ऊपर जो असली पत्रकार है उसकी जर्नलिज्म में कोई भी कलर नहीं, जो है जो देखा वो सत्य बताया। इसमें मेरा क्या मत है उसको मिक्स करके डालकर नहीं देना चाहिए, जो ज्यादातर जर्नलिस्ट में देखने को मिलता है। ऐसे बहुत कम पत्रकार होते हैं जो रियली whatever they have seen वो लोगों के पास पहुंचाने का काम करते हैं। कल्याण बरुआ जी ऐसे ग्रेट पत्रकार थे और मैं इसको क्यों पहचानता हूं, because I am also son of a journalist. My father was editor of Tarun Bharat. Before that he was Delhi representative of Maharashtra Times. He was assistant editor of Lok Satta. So मैं एक पत्रकार, और वो पत्रकार भी जो नॉन करप्ट पत्रकार है, जो पॉलिटिशियन से एनवलप्स नहीं लेता है, ऐसे पत्रकार का मैं बेटा हूं। और मैंने देखा है कि पत्रकार गरीबी में रहकर, staying in poverty, how they can do their best as journalists.
और कल्याण बरुआ जी एक बहुत ही पवित्र व्यक्ति थे क्योंकि उनकी मेरी इंटरेक्शंस थी. We have reached at the concluding stage of the second edition of the Kalyan Barua Award. I am sure the efforts made by My Home India and Northeast Media Forum has made late Kalyan Barua one immortal person, and today we are gathered to remember all his good deeds and the dedication which he performed even in COVID-19. So before I start my vote of thanks, I would invite all of you to kindly, we can pay him a tribute by saying Kalyan Barua Amar Rahe. Kalyan Barua Amar Rahe. Kalyan Barua Amar Rahe. Kalyan Barua Amar Rahe. At the very outset, I would like to thank both My Home India team as well as Northeast Media team who have organized this event, so successful event, which will make Mr. Kalyan Barua immortal forever. So first of all, thanks to both, and with your high claps, please. I would, on my personal behalf and on behalf of My Home India and NEMF, I would like to thank our chief guest of today's event, Honorable Minister of State, External Affairs and Textiles, Government of India, Shri Pavitra Margeshwara ji, for sparing his invaluable time and gracing the occasion. His presence and deliberation made this award more glittering. We express our vote of thanks. In absentia, we can understand, of course, the Parliament is also on and lot of question answer must be there. So he has left in between. So lot of thanks with a big applause for the Minister, please. Friends, our inspiration, our founder of My Home India, former National Secretary of Bharatiya Janata Party and conceptualizer of this event, which was of course the talk started in the Press Club of India in 22. Then in 23 it was the first award which we held in, of course, in Constitution Club itself, and this is the second edition. So we want to thank our founder Sunil Devdar ji for all his efforts to make this program great success. Thank you very much. Now we have with us Shri Kishore Seramji, the Lifetime Achievement Awardee for second Kalyan Barua Awards 2024. Sir, we wanted to know, how does it feel to become fair with the Lifetime Achievement Award? It is super special for me because the recognition is coming from my fraternity, that's the journalist fraternity, and more so from a group of people who are trying to tell a beautiful Northeast story to the world, and which is something very close and dear to me. So it's super special to me. Yeah. डॉक्टर के.एस. चित्राबानु देवी जी, मैम हम आपसे जानना चाहते हो कि आपको ये कल्याण दा की मेमोरियल में आज डिजिटल कैटेगरी में विजेता प्राप्त कर आपको क्या महसूस हो? Actually, I feel very happy to get this award, the second Kalyan Barua Award in the category of digital journalism. Actually, I did write some. What my write-ups were, basically I tried to put my efforts all the issues that is happening in Manipur. Basically I focus on that women and children issues that are being faced by the internally displaced people of the conflict that's going in Manipur. I try to give the narratives and I try to highlight the issues being faced by those vulnerable group of people over there. फरहान अहमद हमारे साथ है, हम इनसे जानना चाहेंगे आपकी ये आज के स्पेशल जूरी मेंशन में आपको ये एक यूनिक अवार्ड मिला है, तो आपको क्या फील हो रहा है? मैं आपसे जानना चाहूँगी. Definitely, I feel very good, and I dedicate my award to all my Northeast people because of the story for there, I am getting the award. I just want to be a voice of those who अनहर्ट. तो मेरा वही स्टोरी है जो ही बोलना है, और ये मैं चाहती हूँ कि और ज़रा स्टोरी मेरे से आके बाहर तक आए,
तो इसके लिए ही मैं ट्राई करूँगी। मुबीना अख्तर जी से हम जानना चाहेंगे, आपको ये कल्याण बरुआ मेमोरियल अवार्ड के प्रिंट कैटेगरी में विजेता में आपको क्या महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। हम इतने दूर नॉर्थ ईस्ट गुवाहाटी से आ रहे हैं अभी, एंड आई एक्सेप्ट दिस अवार्ड ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट वर्किंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन. I have seen how we are just fighting not only climate change but various oddities in our profession again. So this is indeed a privilege for us to be here in the national capital and to receive an award for our work. So I thank all the organizers, the Northeast Media Forum, and I just want that the Northeast Media Forum, they should be more up and doing to connect with people living, I mean the journalist community living in different corners of the Northeastern region, so that our voices are heard in a much larger scale. माई होम इंडिया की फाउंडर श्री सुनील दर्डर जी हमारे साथ हैं. हम सुनील दर्डर जी से जानना चाहते हैं, सर, हाउ डू यू थिंक दैट दिस अवार्ड इज गोइंग टू इम्पैक्ट द फोकस ऑन द नॉर्थ ईस्ट इन द फील्ड ऑफ दिस जर्नलिज्म? देखिए, नॉर्थ ईस्ट से दिल्ली में आकर पत्रकारिता करना कोई आसान बात नहीं है. भाषा अलग है, वेशभूषा अलग है, खान पान अलग है, चेहरा अलग है, और यहाँ का एनवायरनमेंट भी, यहाँ का क्लाइमेट भी अलग है, फूड हैबिट्स भी अलग है. तो ऐसी स्थिति में इतना दूर आकर यहाँ सेटल होना किसी के लिए भी मुश्किल होता है, और नॉर्थ ईस्ट के हमारे बंधुओं भगिनियों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है. तो ऐसे लोग जब यहाँ आकर सक्सेसफुल बनते हैं और यहाँ की सच्चाई नॉर्थ ईस्ट में और नॉर्थ ईस्ट की सच्चाई यहाँ पर पहुँचाने का ऐतिहासिक काम करते हैं, तो उनको अप्रिशिएट करना चाहिए. और ऐसे जो अप्रिशिएट करने जैसे लोग थे उसमें कल्याण बरुआ जी थे, जो बहुत ही कम उम्र में कोविड ने उनकी जो है जान ली. एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण चीज़ थी, लेकिन उनकी स्मृतियों को कायम रखने के लिए हमने ये अवार्ड फंक्शन चालू किया नॉर्थ ईस्ट मीडिया फोरम के साथ, और आज ये दूसरा अवार्ड फंक्शन हुआ है. इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ. So one more thing we would like to know, that do you think that this award can impact younger upcoming journalists to have a unique interaction for the Northeast की जो unique कहानी है इस पे और ज़्यादा focus करने में मदद करेंगे? Rather, I will ask this question to Jojo, whether this award is inspiring you or not. I congratulate Sudarshan TV because you are the only channel which channel started a separate slot for news from Northeast. So no other channel. So, and a journalist categorically who belongs to Northeast was employed by Sudarshan TV, and you are the most successful journalist. So I will rather ask you whether this award function inspired you or not. सो मच सर. तो ये था हमारे साथ श्री सुनील दर्डर जी, जिन्होंने अभी हमारे साथ खास बातचीत में किया है कि यहाँ की नॉर्थ ईस्ट की पत्रकार जहाँ आके अलग फिल्म में नॉर्थ ईस्ट की कहानी बताना आसान चीज़ नहीं है, लेकिन इस इनिशिएटिव कल्याण बरुआ की मेमोरियल की अवार्ड्स के माध्यम से लोग नॉर्थ ईस्ट की पत्रकार को और देश भर की पत्रकारों को और इंस्पायर करने की एक कोशिश है. मैं थोड़ा सुदर्शन न्यूज़ चैनल के लिए विद कैमरा पर्सन जेतू के साथ नई दिल्ली से.